Hello, guys. Welcome to our channel on Bright Future. If you are a beginner, then don't worry. We are here. You are on a right platform where I'll guide you step by step. But don't forget to subscribe. So, let's start. So, basically, firstly, you shouldn't know the meaning of Ielts. It's basically a English language test. The full form of IELTS is International English Language Testing System. And this we have four modules. First is listening, writing, reading, and speaking. So now, firstly, let's talk about listening. And this basically we have 30 minutes with 40 questions. And they will give you extra 10 minutes to transfer your answers on the answer booklet. So we can say that we have total 40 minutes for 40 questions. आप लोग पहले उन आंसर्स को अपनी क्वेश्चन बुकलेट पे लिखोगे, देन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलेंगे आपको टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑन द आंसर बुकलेट. Now we'll talk about next module, that is writing. In this module we have 1 hour and we have to do 2 tasks. For the first task we'll utilize our 20 minutes in which we have to write about the essay of 150 words. And on the second task we'll utilize our 40 minutes in which we have to write about 250 words. लेकिन ऐसा क्यों कि फर्स्ट टास्क और सेकंड टास्क में टाइमिंग का फ़र्क क्यों नहीं? अगर 60 मिनट्स हैं 30 क्यों नहीं? तो इनमें भी जो टास्क 2 है उसकी वेटेज ज़्यादा रहती है. फर्स्ट टास्क में हमें कोई ऐसे डिस्कशन के लिए दे दिया जाएगा और जो सेकंड टास्क है उसमें हमारा जो कोई ग्राफ दे रखा होगा उसको एक्सप्लेन करोगे आप. कुछ ग्राफ होगा उसको एक्सप्लेन करना हो, या कोई टेबल या कोई डायग्राम, कोई प्रोसेस, ऐसी चीज़ें कुछ डायग्राम के फिगर में दी होंगी और आपने उसको एक्सप्लेन करना है इन योर ऑन वर्ड्स. And in the next module, that is reading. In this module we have 1 hour, that is 60 minutes, and they'll give us 3 passages and we'll utilize 20 minutes on each passage. And total 40 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा एज लिसनिंग. जैसे लिसनिंग में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे थे हमें टू ट्रांसफर आवर आंसर्स ऑन आंसर शीट, बट इन दिस विल not have any extra time for answers. And in the last module, that is speaking, इसमें हार्डली मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स जाते हैं हमारे स्पीकिंग में. ये 3 पार्ट्स में होती है. फर्स्टली बेसिक के बारे में बात की जाती है, देन आपको जो एग्जामिनर है वो क्यू कार्ड दे सकता है. क्यू कार्ड का मतलब है कोई टॉपिक, उसमें वो आपको कुछ पॉइंट्स देगा कि ये कवर अप करने हैं. आपने उस क्यू कार्ड जस्ट लाइक ऐसे या अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए वो आपको 1 मिनट देंगे प्रिपेयर करने के लिए. 1 मिनट में आपको अपना क्यू कार्ड के पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं एंड देन फॉर द 2 मिनट्स 1.5 to 2 मिनट्स आपको वो अपना टॉपिक उनके आगे रिप्रेजेंट करना है. एंड इन द लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 3, इसमें होगा फॉलोअप, जिसमें आपको अपने टॉपिक के बारे में एलेबोरेट करना है. फॉलोअप क्या होता है? समथिंग दैट इज़ डन टू फिनिश अ प्रीवियस सेक्शन और मेक इट मोर सक्सेसफुल. आपने उन पॉइंट्स पे फोकस करना है, उन पॉइंट्स पे जिन
जिनको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जामिनर ने आपको कहा है। जो बेसिकली आपने उस फॉलो अप में लास्ट पे वो पॉइंट्स को कवर करना है जो आपको एग्जामिनर ने एक्सप्लेन करने के लिए कहे हैं, उन्हीं पे फोकस करना है। So, in the next video, we'll discuss further about these 4 modules, and I'll provide you a video on listening in which you have to write your answers on the answer sheet. Whatever you listen, you have to write on your sheet. Bye bye, guys.